Dear student, I am Manohar Patil. Today we have to study about the trigonometric functions. बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्लास 12 का मैथमेटिक्स का। और ये जो चैप्टर है आपको सीईटी और जेई के प्रिपरेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज हम बहुत ही बेसिक देखने वाले हैं। टुडे वी हैव टू सॉल्विंग द प्रिंसिपल सॉल्यूशंस ऑफ trigonometric equations. And what are the trigonometric equations? For that we require the trigonometric table. So we know that these are the ratios and these are the angles. For ratios we have to calculate the values of angles. बहुत easy इसको याद रखना, टेबल को याद रखना, आपको बस याद रखना है the numbers from 0 to 4. So write down 0 1 2 3 4. आपको बस three steps याद रखना है. Step number first, write down the number from 0 to 4. Step number second, divide by 4. हर एक टर्म को डिवाइड बाय 4 करना है. So that is 0 divided by 4 means 0, it becomes 1 by 4, it becomes 1 by 2, it becomes 3 divided by 4, it becomes 1. 4 divided by 4 that is 1. और उसके बाद आपको लेना है स्क्वायर रूट, दैट इज 0, इसका स्क्वायर रूट आएगा 1 by 2, इसका आएगा 1 by root 2, इसका आएगा 3 divided by 2 और इसका आएगा 1. These are the 4 numbers you have to remember. Just आपको याद रखना है, that is 3 steps. What is the first step? Write down the number from 0 to 4, divide by 4, taking the square roots. These are the 4 values, means ये all 4 values है sin of theta के. So write down the all values of sin theta, that is 0. Next 1 divided by 2, 1 divided by root 2. Next is root 3 by 2. And the last is 1. So remember in such way that you can remember the values for sin. आपको बस sin के नंबर ही याद रखने हैं, बाकी कोई भी एक नंबर याद रखने की जरूरत नहीं है. बहुत इजी है. आई कैन रिपीट, वेरी सिंपल. रिमेंबर द ओनली 4 वैल्यूज. उसको कैसे याद रखना है? राइट डाउन द नंबर्स फ्रॉम 0 to 4 डिवाइडेड बाय 4 एंड आफ्टर दैट टेकिंग द स्क्वायर रूट वी गेट द नंबर्स. अब इसको हाउ टू रिमेंबर द वैल्यूज फॉर cos थीटा, बहुत इजी. इसको रिवर्स लिखना है, उल्टा लिखना है मतलब. सो राइट डाउन द वन हियर 0, नाउ हियर root 3 by 2, then 1 by 2, and it becomes 1 by root 2. So remember the formula for tan theta. So tan theta means tan theta is equal to what? That is sin of theta divided by cos theta. So just by taking the reciprocal of sin theta and cos theta we get the value of tan theta. बहुत सिंपल है. कैसे सॉल्व करना है इसको? दोनों का रेशो लेना है, sin divided by cos. So taking the ratio we get the value 0. After taking the ratio 2 get cancel, 1 by root 3 is the answer. Taking the ratio we get the 1. After taking ratio 2 get cancel, root 3 as the answer, and 1 divided by 0 that is not defined, means infinity. So how to remember the value of cot theta? आपको बस उसको रिवर्स मैनर में लिखना है, that is infinity, 0, root 3, 1 by root 3, and that is 1. How to remember the value of sec theta? Remember it is the reciprocal of cos theta. So आपको बस reciprocal of cos theta करना है, then we get the value of sec theta. So let's we start. So that is 1 upon 1 becomes 1, taking the reciprocal 2 by root 3, taking the reciprocal of this value root 2, taking the reciprocal 2, and 1 by 0 it becomes infinity. Similarly for cosec theta, so now opposite manner में लिखना है, infinity 1 2 2 by root 3, and then we get the value root 2. So in such way that we complete the values from 0 to 90 डिग्री. सो हाउ टू रिमेंबर द वैल्यू फॉर 180, 270 और 360. बहुत इजी, आपको बस ये याद रखना है कोऑर्डिनेट सिस्टम. सो अगर हम यहाँ से एंगल मेजरमेंट करेंगे तो दिट बिकम 0, ये आपका आ जाएगा 90 डिग्री, ये आपका आ जाएगा 180 डिग्री, वापस ये 270 डिग्री और ये वापस आपका 360 डिग्री. सो बहुत ईजी, आपको याद रखना है कि 0 और 360 डिग्री दोनों सेम लाइन पे आते हैं. बोथ आर कम्स ऑन द सेम लाइन. सो देयरफॉर 0 का जो भी वैल्यूज रहेगा फॉर रिस्पेक्ट टू साइन थीटा, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक, वो सिमिलरली 360 डिग्री का रहेगा. तो एज इट इज लिखना है हमें. 0 का जो भी वैल्यू 0 1 0 इन्फिनिटी 1 एंड इन्फिनिटी. नेक्स्ट जो भी 0 का आंसर है एग्जैक्टली वही लाइन पे अपोजिट साइड पे क्या है 180 डिग्री. सो 180 डिग्री का वैल्यू जब भी लिखना है बस निगेटिव साइन लेना है. सो ऑल सेम वैल्यूज रहेंगे, बस जो भी +1 है इट बिकम्स -1. सो राइट डाउन द एज इट इज वैल्यू 0 -1 0 infinity -1, that is infinity. बहुत सिंपल है. हाउ टू रिमेंबर द वैल्यूज ऑफ 270 डिग्री? 270 डिग्री एग्जैक्टली अपोजिट टू 90 डिग्री है. बहुत इजी, जो भी 90 डिग्री का आंसर रहेगा उसमें जहाँ पे भी प्लस रहेगा +1, write down the -1. So these are the values for 90 degree. So how to write down 270? Just take +1 becomes -1 and +1 becomes -1. So now we write here -1, that is 0, infinity 0, infinity and -1. So in such way that we complete
the principal table, which is most important for solving the questions on the principal solution of trigonometric function. So बहुत easy है, कैसे याद रखना है आपको? You have to remember only how many steps? That is 3 steps. What is the first step? आपको नंबर लिखना है 0 to 4. After that क्या करना है उसको? Divided by 4. और उसके बाद क्या करना है? Taking square root. After taking square root, we get all those values. इसको उल्टा लिखना है, रिवर्स कॉस का मिल जाएगा, दोनों का रेशो लिया तो tan मिल जाएगा, उसको उल्टा लिखना है, दैट इज कॉट. सेक कैसे लिखना है? 1 अपॉन कॉस. सो टेकिंग द रेसिप्रोकल ऑफ कॉस वैल्यूज वी गेट द सेक. उसको वापस रिवर्स लिखना है, कोसेक मिल जाएगा. हाउ टू रिमेंबर 180, 270, 360? 360 और 0 सेमी लाइन पे आता है, तो 360 का वैल्यू जो भी रहेगा सिमिलर टू 0 का वो लिख लीजिए. हाउ वी राइट डाउन द वैल्यू ऑफ 180 डिग्री? एग्जैक्टली अपोजिट टू 0. जो भी 0 का आंसर रहेगा 180 में उसको बस माइनस लिखना है. तो हमने बस यहाँ पे जो भी +1 था उसको हमने -1 लिख लिया. एंड आफ्टर दैट 270 एग्जैक्टली अपोजिट टू व्हाट? 90 डिग्री. सो 90 डिग्री में जो भी प्लस रहेगा यहाँ पे माइनस लिखना है, तो हमने यहाँ पे माइनस लिख लिया. सो इन सच वे दैट वी कंप्लीट द ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल. बहुत इंपॉर्टेंट है, जल्दी से इसको लिखना है, आपको अच्छे से रिमेंबर करना है, ताकि आप इसके बाद जो भी क्वेश्चन आएंगे वो आप खुद सॉल्व कर सकते हो. सो राइट डाउन द क्वेश्चंस, राइट डाउन द ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल्स. बहुत इजी है, जल्दी से कंप्लीट करना है इसको और टेक द स्क्रीनशॉट. सो वी गो फॉर द नेक्स्ट. सो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है. सो नाउ हियर आपको बस ये स्टेटमेंट याद रखना है, ऑल स्टूडेंट टेक कॉफी, ऑल स्टूडेंट टेक कॉफी. सो नाउ देयर आर द 4 क्वाड्रेंट. दिस इज द फर्स्ट क्वाड्रेंट. नाउ इट इज द सेकेंड क्वाड्रेंट. This is the third quadrant. ये बहुत ही बेसिक है. और now it becomes the fourth quadrant. So that is, so बहुत सिंपल है, हम इसको अभी नंबर्स लिख लेंगे. This is a 0 angle, और again we know that now it is becomes 360 degree. So it becomes 90 degree. It becomes 180 degree. It becomes 270 degrees. So remember the values in terms of radian also. These are the values we written in terms of degree. So what is the value in terms of radian? Remember that is 2 pi. So for 90 degree it is pi by 2. For 180 degree it is pi. For 270 it is 3 pi by 2. So very simple to remember all values in radian. And most importantly, remember the statement, all student take coffee. So all student का S take coffee. Remember that is the all. Very easy to remember. Most importantly बहुत easy है, आप इसको अच्छे से याद रखना है. So that is all student का S take and coffee का C. All, what is the meaning of all? That is all ratios are positive in first quadrant. Remember, all ratios are positive in first quadrant. Next, S for sine theta. So remember, S for that is sine of theta, and what is the reciprocal of sine theta? That is cosec theta. So both are positive in which quadrant? That is second quadrant. Next, T for tan theta, and the reciprocal of tan theta, that is cot theta. So tan theta and cot theta both are positive in third quadrant. Remember the next, C for cos theta and sec theta. The reciprocal of cos theta is sec theta. So now both are positive in fourth quadrant. बहुत easy और बहुत important है. It is help to remember the allied angles. So हमें study करना है allied angles. So very simple to remember the allied angle. So for that you have to remember all student take coffee. What is the meaning of all student take coffee? All means all ratios are positive in first quadrant. मतलब all sine, cos, tan, sec, cosec. After that, S for sin theta, reciprocal of sin, that is cosec theta, positive in second quadrant. Remaining all ratios are negative. उसके बाद T for tan theta, reciprocal of tan theta, that is cot theta, both are positive in third quadrant. Remaining all are negative. Next one is that is C for cos theta, reciprocal of cos theta, that is sec theta. So remaining all values are negative in fourth quadrant. So this is most important, and most importantly we have to remember in terms of theta. So now for the first quadrant, what is the values of theta? So remember the values of theta for the first quadrant, that is
it becomes theta, or pi by 2 minus theta. Next, for the second quadrant, remember that is pi by 2 plus theta, or pi minus theta, that is 180 minus theta. So for the third quadrant, what is the value of angle? That is pi plus theta, or 3 pi by 2, 3 pi by 2 minus theta. Next, for the fourth quadrant, we can write 3 pi by 2 plus theta, and it becomes that is 2 pi minus theta. So these are the most important values of the angle. So आपको ये अच्छे से याद रखना है. अगर if you remember these values, so you can solve any question based on the principal solution of trigonometric equation. So remember for the first quadrant, that is theta or pi by 2 minus theta. Next, pi by 2 plus theta, pi by 2 plus theta, or 180 minus theta. It becomes pi by 2 plus 3 pi by 2 minus. So remember, it becomes 3 pi by 2 plus and 2 pi minus. So in such way that you can remember the values. So for that, so according to that, you can solve the numbers. So very easy. So how we can solve? So remember, sine theta is positive in second quadrant, sine and cosec. Next, tan cot positive in third quadrant. Next one, cos theta and sec theta is positive in fourth quadrant. Remaining all ratios are negative. So most importantly, these are the important observation for you have to remember. So now we go for the solving the questions. Okay, so what is meant by trigonometric equations? बहुत ही सिंपल है. Trigonometric equations means the equation involving the trigonometric function. So remember, so that is sine of theta is equal to 1 by 2. So now this is the trigonometric equation. This is the equation. In this equation, the sine theta is the trigonometric functions. So therefore, we can call such equations are called trigonometric equations. बहुत simple definition है. जिसमें भी trigonometric functions present रहेंगे तो उसको आप बोल सकते हो trigonometric equation. So one more example we take, that is sine square theta plus cos square theta equal to 1. So now this is the trigonometric equation. Why it is trigonometric equation? बहुत सिंपल है, इसमें trigonometric function present है, इसलिए हम इसको बोलेंगे trigonometric equation. कौन से trigonometric function present है उसमें? एक sin theta और second one is cos theta. Next, we can solve. How we solve the trigonometric solutions? What is meant by trigonometric solution? बहुत easy definition है, इसको read करना एक बार. A value of variable in a trigonometric equations which satisfy the equation is called solution of trigonometric equation. बहुत simple है, हमें पता है कि sin of theta means when we put the value of theta is equal to 30 degree, then we get sin 30 degree is equal to 1 by 2. So that is sin of 30 degree is equal to 1 by 2. So what is the meaning of that? Theta is equal to 30 degree. Now it is the value of variable. भाई वेरिएबल का वैल्यू है, हमने उस वेरिएबल के जगह पे 30 डिग्री पुट किया तो उसका आंसर हमें इक्वल टू 1 by 2 मिल गया. सो मतलब एट व्हाट एंगल थीटा इट बिकम्स 1 by 2, दैट इज 30 डिग्री. सो 30 डिग्री इट व्हाट 30 डिग्री इज नथिंग बट द 30 डिग्री विच सेटिस्फाई द गिवन इक्वेशन. सो इन सच वे दैट वी कॉल्ड इट इज ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन. सो बहुत सिंपल है, इसको याद रखना. सो इन सच वे दैट वी कैन सॉल्व the solution of trigonometric equation. Next one, so principal solution, जो भी हमें अभी example solve करना है, that is very easy. Principal solution means a solution of alpha, that is the angle of trigonometric equation, is called principal solution if अगर alpha का value between the 0 to pi that is 0 to 360 degree के between रहेगा, so we can call that this is the principal solution of given trigonometric equation. So take the note of the given all the definitions. Most important definition you have to remember, इसको अच्छे से याद रखना है. ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस मींस जिसमें भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस प्रेजेंट रहेंगे उसको हम ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस बोलेंगे. ट्रिग्नोमेट्रिक सॉल्यूशंस मतलब जो भी वेरिएबल उस वैल्यू को सेटिस्फाई करेगा उसकी वजह से इक्वेशन बैलेंस होगा या इक्वेशन सॉल्व होगा, दैट्स वैल्यू को हम बोलेंगे दैट इज सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस. एंड द प्रिंसिपल सॉल्यूशन मतलब जो भी अल्फा हम कैलकुलेट करेंगे उसका जो वैल्यू बिटवीन द 0 और 2 पाई होना चाहिए. सो इन सच वे दैट यू कैन रिमेंबर द ऑल डेफिनेशन. और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हमें अभी सॉल्व करना है दैट इज द प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक. सो नेक्स्ट वी हैव टू कैलकुलेट द प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस. बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस है, आपको जल्दी से इसको हमें अभी सॉल्व करना है. सो नाउ लेट्स वी स्टार्ट. सो व्हाट इज द गिवन, दैट इज द प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ
साइन थीटा इक्वल टू 1/2 हमें कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले आपको ये समझ में आना चाहिए कि साइन थीटा इक्वल टू 1/2, सो थीटा का वैल्यू हमें क्या सिलेक्ट करना है कि तब उसका आंसर 1 आ जाएगा फ्रॉम द ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। रिमेंबर दैट वी सिलेक्ट द थीटा इक्वल टू व्हाट 30 डिग्री, और उसका रेडियन में आंसर आएगा 5/6 रेडियन। सो एंड 1/2 इज द पॉजिटिव नंबर है, सो साइन पॉजिटिव कब रहेगा वो आपको समझ में आना चाहिए। सो ऑल स्टूडेंट take coffee. Sin theta is positive in first quadrant and second quadrant. In second quadrant, we can write the angle that is pi minus theta. So write down that is sin of pi/6. इसका आंसर भी 1/2 आता है। और नेक्स्ट किसका आंसर 1/2 आएगा? pi minus theta means sin of pi minus what is the value of theta? pi/6. So that is pi/6. इसको कैलकुलेट करना है। So क्या आएगा इसका आंसर? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके 6 pi minus that is 5 pi/6 and next that is sin of pi/6 is equal to 1/2. So these are the two values. Are the principal solution of given sin theta equal to 1/2. So we can write, and as we know that so pi/6 का जो भी आंसर है 0 से ज़्यादा है और 2 pi से कम है, and next that is 0. So 5 pi/6 is greater than 0 and less than 2 pi. So therefore we can write that pi/6 and 5 pi/6 are the principal solution of sine of theta equal to 1/2. So in such way that we calculate the first question, बहुत easy था. Now we solve for the second example. बहुत easy example है. So tell me sin theta equal to 1/√2. So first tell me 1/√2. So ये कब आएगा? From the principal table से when we substitute the value theta का आंसर जब भी हम 45 डिग्री और उसको रेडियन में क्या पुट करना है? pi/4. So whenever we put the theta is equal to 45 degree then we get value 1/√2. लेकिन most important है आपको साइन कन्वेंशन चेक करना है. What is the sign convention here? साइन कन्वेंशन आपका निगेटिव, तो आपको वापस ऑल स्टूडेंट टेक कॉफी के हिसाब से सॉल्व करना है. ऑल स्टूडेंट टेक कॉफी. सो यहाँ पे साइन थीटा निगेटिव है तो आपको पता होना चाहिए कि साइन थीटा निगेटिव इन विच क्वाड्रेंट. सो बहुत सिंपल है. ऑल मतलब सब पॉजिटिव, साइन मतलब साइन पॉजिटिव रहेगा सेकंड में. सो साइन थीटा निगेटिव रहेगा थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में. तो आपको उसका एंगल पता होना चाहिए. व्हाट इज द एंगल फॉर थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट? वेरी सिंपल. थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल आएगा पाई प्लस थीटा और फोर्थ का आएगा 2 पाई माइनस थीटा. और हमें ऑलरेडी हमने थीटा का वैल्यू फाइंड आउट कर लिया, दैट इज 45 डिग्री और pi/4. So let's we start. So that is sine of that is so sine of pi plus theta means pi plus theta का वैल्यू क्या पुट करना है? pi/4 then is equal to sine of 2 pi minus theta is equal to minus sine of theta according to allied angle. So we get and substitute the value of theta. So what is the value of theta? Theta का वैल्यू है pi/4. So हम यहाँ पे pi/4 सब्सटीट्यूट कर देंगे. तो सॉल्व करना है जल्दी. साइन ऑफ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है, इसका आंसर आएगा 5 pi/4 इज इक्वल टू साइन ऑफ क्या आएगा? 4 2 8, 8 minus pi that is how many times? 7 pi/4 is equal to minus sine of pi/4. मतलब इसका आंसर आएगा -1/√2. So these are the two values are the principal solution of given question. So we know that 5 pi/4 and 7 pi/4 both the values are greater than 0 and less than 2 pi. तो इसको लिखना है, बहुत important है, greater than 0 and less than 2 pi. So therefore we can write 5 pi/4 and 7 pi/4 are the principal solution of sin theta equal to -1/√2. So take the screenshot of the given example. बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था. हमें बस पहले ऑब्जर्वेशन, फर्स्ट ऑब्जर्वेशन आपका होना चाहिए कि जो भी रेशो दिया है उसका नंबर पॉजिटिव है या निगेटिव है. यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे निगेटिव है. उसके बाद चेक करना है कि रेशो इन विच क्वाड्रेंट पॉजिटिव है और कौन से क्वाड्रेंट में निगेटिव है. अकॉर्डिंग टू दैट आपको अलाइड एंगल के हिसाब से वैल्यू सेलेक्ट करना है, उसको सब्स्टिट्यूट करना है, उसको कैलकुलेट करना है. तो ये क्वेश्चन तो बहुत ईजी था. टेक द स्क्रीनशॉट. वी गो फॉर द नेक्स्ट एग्जाम्पल. तो नेक्स्ट एग्जाम्पल है कॉस थीटा का. सो फर्स्ट क्वेश्चन है
we have to solve the principal solution of this given trigonometric equations. नंबर दिया है 1/2. सो आपको जल्दी से रिकैप करना है फ्रॉम द प्रिंसिपल टेबल कि cos थीटा का आंसर 1/2 कब आता है. सो टेल मी नाउ इट इज गेट द वैल्यू ऑफ 60 डिग्री. 60 डिग्री को हम क्या लिखेंगे, दैट इज π/3 रेडियन और पॉजिटिव है. सो अगेन ऑल स्टूडेंट टेक कॉफी से जाना है, ऑल स्टूडेंट टेक कॉफी. सो सेल में cos थीटा कब कौन से क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है. सो फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में. व्हाट इज द एंगल फॉर फोर्थ क्वाड्रेंट, 2π माइनस थीटा. और ऑलरेडी हमने थीटा को कैलकुलेट कर लिया. तो क्या आएगा इसका आंसर, cos ऑफ π/3 का आंसर आएगा 1/2 और cos ऑफ 2π माइनस थीटा, और थीटा का आंसर है π/3. सो इसको सॉल्व करना है. cos ऑफ π/3 इज इक्वल टू हाफ और इसका सेम आंसर आएगा cos ऑफ, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है, 3 2 जा 6 और 6 माइनस 1 दैट इज 5, मतलब 5 टाइम्स पाई डिवाइडेड बाय 3. दोनों जो वैल्यू है π/3 एंड 5π/3 both values are very simple, greater than 0 and less than 2π. So that is, so therefore we can say that π/3 and 5π/3 are the principal solution. Solution of what is question given, that is cos theta equal to 1/2 in such way that we solve the first question. बहुत easy था. अभी solve करना है second example. So जल्दी से recap करना है. What is the value of cos theta minus 1/2 कब रहेगा. So पहले हमें find out करना है कि 1/2 कब आता है. So very simple, जब थीटा का आंसर 60 डिग्री रहेगा और we can say that is π/3 को माइनस है. तो अभी हमें फाइंड आउट करना है फ्रॉम ऑल स्टूडेंट टेक कॉफी, ऑल स्टूडेंट टेक कॉफी. तो cos थीटा निगेटिव कब रहेगा. सो जल्दी से रिकैप कीजिए. ऑल स्टूडेंट, फर्स्ट में पॉजिटिव, साइन और सेक मतलब यहाँ पे निगेटिव, उसके बाद थर्ड में निगेटिव, ऑल स्टूडेंट टेक कॉफी. सो फोर्थ में पॉजिटिव है. सो नेगेटिव कौन से क्वाड्रेंट में आया cos थीटा, सेकेंड में और थर्ड में. और सेकेंड और थर्ड में एंगल क्या लेना है आपको, बहुत सिंपल, यहाँ पे लेना है पाई माइनस थीटा और यहाँ पे लेना है पाई प्लस थीटा. बहुत सिंपल है. cos थीटा कौन से क्वाड्रेंट में पॉजिटिव आता है, फर्स्ट और फोर्थ में, और निगेटिव किस में आता है, सेकेंड और थर्ड में. और सेकेंड का हमें लिखा हमने पाई माइनस थीटा और पाई प्लस थीटा, और थीटा का वैल्यू पता है हमें. cos 1/2 कब आएगा, 60, दैट इज π/3. सो बस उसको लेके सॉल्व करना है. सो व्हाट वी गेट, दैट इज cos ऑफ pi minus theta, that is π/3, then cos of pi plus theta, theta means that is π/3 is equal to minus cos of that is π/3. so इसका आंसर आएगा -1/2. सो करो, इसको सॉल्व करना है. cos of क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 3 minus 1 that is 2π/3. बहुत सिंपल, इसको सॉल्व करना, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है. cos of 3 plus that is 4π divided by 3. So write down both angle, 2π/3 and 4π/3. The values of both are very simple, greater than 0 and less than 2π. So therefore we can say that so that is 2π/3 and 4π/3 are the principal solution of that is cos theta equal to -1/2 in such way that we calculate the value of cos theta plus 1/2 and cos theta minus 1/2. So ये बहुत important questions है. Many time they ask into the written board examinations. बहुत बेसिक क्वेश्चंस है. अगर आपको ये अच्छे से आ जाएंगे तो नेक्स्ट एग्जाम्पल आप प्रॉपरली सॉल्व कर पाओगे. सो नाउ वी गो फॉर द नेक्स्ट एग्जाम्पल्स. So these are the, so now we have to solve the principal solution of tan theta plus 1 and tan of theta minus 1. दोनों क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है. So let's we start tan theta plus 1. So tell me, so tan theta positive in which quadrant, all student take coffee. So first quadrant and third quadrant में positive है. What is the value in third quadrant, that is pi plus theta. And 1 कब आएगा tan, whenever we put the value of theta is equal to 45 डिग्री. और रेडियन में क्या लिखना है आपको, pi/4. सो इसके हिसाब से इसका आंसर आ जाए. सो द आंसर विल बी tan ऑफ pi/4 का आंसर आता है 1 और tan ऑफ किसका आंसर आएगा 1, पाई प्लस थीटा. थीटा कितना आपका pi/4. तो इसको सॉल्व करो जल्दी. tan pi/4 equal to 1, tan of
that is cross multiplication करना है 5 pi by 4. So in such way that we get the two angles. So write down both angles, that is pi by 4, and next 5 pi by 4. The write down both the values are greater than 0 and less than 2 pi. So in such way that we can say that pi by 4 and 5 pi by 4 are the solution of, are the principal solution of, are the principal solution of, principal solution of tan of theta equal to 1. So we solve the question first. नेक्स्ट वी हैव टू सॉल्व, बहुत सिंपल है, इसको आपको सॉल्व करना है, जल्दी से रिकैप करना है. tan थीटा इक्वल टू 1, 1 कब आएगा, when थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री और पाई बाय 4 और मोस्ट इंपॉर्टेंटली -1. सो हमें जल्दी से रिकैप करना है कि tan थीटा नेगेटिव कब रहेगा. ऑल स्टूडेंट टेक कॉफी. सो ऑल स्टूडेंट टेक कॉफी, फर्स्ट और थर्ड में पॉजिटिव, तो बचा कौन आपका सेकेंड और फोर्थ. सेकेंड में एंगल क्या आएगा, पाई माइनस थीटा, और इसमें आएगा 2 पाई माइनस थीटा. सो बाय टेकिंग द बोथ एंगल वी सॉल्व the value of tan of theta equal to -1. So let's we start. So that is tan pi minus theta, theta कितना लेना है, pi by 4 is equal to next tan of 2 pi minus theta, that is theta कितना लेना है आपको, pi divided by 4. So that is pi divided by 4 equal to minus tan of, that is pi by 4. इसका आंसर आएगा -1. So similarly solve both, that is tan of cross multiplication करना है 4 pi minus 1, that is 3 pi by 4. बहुत ही सिंपल है इसको सॉल्व करना. Then make the cross multiplication, 4 2 is 8, 8 में 6 जाएगा. So 8 minus 1, that is 7, 7 pi by 4 equal to -1. So we get 3 pi by 4. The value is greater than and less than 2 pi, and next we get the value 7 pi by 4, value is greater than or less than, that is 2 pi. So therefore we can write 3 pi by 4 and 7 pi by 4 are the principal solutions of, principal solution of tan theta equal to -1. So in such way that we solve the questions. So these are the most important questions we calculate. Take the screenshot of the given examples. आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा. जल्दी से इसको रिकैप करना है. सो हमने ये लेक्चर में बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल टेबल का वैल्यूज रिमेंबर किया. उसके बाद हमने ऑल स्टूडेंट टेक कॉफी, मतलब विच रेशो इज पॉजिटिव इन विच क्वाड्रेंट एंड विच रेशो इज नेगेटिव इन विच क्वाड्रेंट. आफ्टर दैट वी सॉल्व द प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन. सो वी टेकिंग द 6 एग्जाम्पल, वी सॉल्विंग द ऑल 6 एग्जाम्पल. आपको अच्छे से इसका प्रैक्टिस करना है. कुछ भी डाउट आता है तो प्लीज़ यू कैन टेक्स्ट मी, आई विल आंसर दैट. एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, अगर आपको ये अच्छे से समझ में आ रहा है लेक्चर, सो प्लीज़ इसको लाइक करना है, शेयर करना है और कमेंट तो जरूर करना है. थैंक यू वेरी मच.